therapeutic recombinant proteins expressed in genetically modified plants. Therapeutic means that there may be different type of compounds that can be used to cure different type of microbial diseases. So such compounds, they may be called as therapeutic. Plants, they are a good alternative to animals to produce these therapeutic compounds or the proteins. The reason is that plants, they are mainly inexpensive to grow, and after manipulation in the laboratory they can be scaled up at commercial production. So this is the reason that they are more suitable. इसके अलावा एक और रीज़न भी है कि बाज़ दफ़ा जो एनिमल कल्चर्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स की प्रोडक्शन के लिए, तो बाज़ दफ़ा इसमें कंटेमिनेशन का इशू आ जाता है कि सेल लाइंस जो हैं वो वायरस से या प्रायोन से कंटेमिनेट हो जाती हैं, जो कि एक बायोसेफ्टी का मेजर कंसर्न है. तो इस वजह से अब चूँकि प्लांट्स में इस तरह के ज़्यादा इश्यूज नहीं होते, तो इसलिए प्लांट्स को एज ए बायोरिएक्टर और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स दे आर more favored. In addition to that, some post-translational modifications that are important for the function of proteins, they can also be carried out in plants, although there may be some minor differences in post-translational modifications when compared with animals, but even then, plants, they have been used. So in this regard, the first report for the expression of recombinant protein was related to the expression of human growth hormone that was expressed as a fusion protein with nopaline synthase enzyme from the Agrobacterium tumefaciens. अगर आपको याद हो कि जब हम डिस्कस कर रहे थे एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमने कुछ बायोलॉजिकल आस्पेक्ट्स जो थे वो डिस्कस किए थे कि जब टीडीएनए ट्रांसफ़र होता है तो बेसिकली वो ऑन्कोजीन्स को कैरी करता है, जिसमें से कुछ जीन जो हैं वो नोपालाइन बायोसिंथेसिस की भी होती हैं. तो इस तरह से जो फर्स्ट रिपोर्ट थी जिसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को एक्सप्रेस करवाया गया प्लांट्स के अंदर, वो एक फ्यूजन प्रोटीन के तौर पर या हाइब्रिड प्रोटीन के तौर पर एक्सप्रेस करवाया गया, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जो जीन है उसको नोपालाइन सिंथेज जीन के साथ फ्यूज़ करवाया गया. लेकिन इसमें एक लिमिटेशन ये आ गई कि इसमें जो एक्सप्रेशन था वो ट्रांसक्रिप्शन तक था, दैट ओनली ट्रांसक्रिप्टोम was detected and it doesn't carry it to the translational step. Later on, some scientists were able to express the antibodies by using some plant-specific antigenic determinants. And the protein expression was there, but again it was not having any application because the antibodies that were raised, they belongs to plant determinants or antigens. So in this way, they were not applicable to human or other animals. So the first report of the expression of human protein was related to serum albumin. So although later on variety of antibodies, they were expressed in plant tissues and they were able to provide the passive immunity in the organisms. पैसिव इम्यूनिटी एक ऐसी टाइप है इम्यूनिटी की जिसमें हम एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं, और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये इम्यून सिस्टम को जाके ट्रिगर नहीं करती, जस्ट ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू ट्रिगर द ह्यूमन इम्यून सिस्टम. So in this way, such antibodies, they can provide passive immunity and protection against a particular type of disease. So variety of plants like tobacco, then sunflower, fruits, vegetables, cereals,
they have been used to express foreign proteins like the antibodies, because mostly the plants, they can be ingested in raw form like vegetables, and the purification of the protein or antibodies, in most of the cases, it is not required. So that's why plants, they are more favored. So here I can quote a few examples like IgA antibodies that contain 4 polypeptide chains. It has been expressed in plants, and some antibodies against the herpes virus 2, they have also been managed. In addition to antibodies, some vaccines, they have also been prepared by using plant system. As I told you that they are much safer and cheap. तो अगर हम इसमें फोकस करें तो एक कॉजल एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, जो कि टूथ इन्फेक्शन करता है, कैविटीज़ प्रोड्यूस करता है। तो इसके एक डिटर्मिनेंट्स लेके, एंटीजन लेके, सरफेस एंटीजन लेके, तो उसको एक्सप्रेस करवाया गया प्लांट्स में। तो बाद में देखा गया कि अगर प्लांट की ओरली इनटेक किया जाए तो इससे जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो इम्यून हो जाते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शन by Streptococcus mutans. So that were the early examples. Then later on, variety of proteins have been expressed in the plants against different type of microbial pathogens. तो इसमें जो एंटीजन का जो सोर्स था, या प्रोटीन जो कि एंटीजन के तौर पर एक्ट करती है, उसकी जीन एक्सप्रेस करवाएगी प्लांट्स के अंदर। तो जब ये देखा गया कि इसकी जब ओरल अपटेक किया गया तो इसने इम्यून सिस्टम को जो था वो इंड्यूस किया या इन्फ्लुएंस किया। सो हियर आई कैन कोट a few examples that what type of microbial antigens or determinants were expressed in the plants. Like here the rabies glycoproteins. रेबीज़ एक डिजीज़ है जो कि डॉग्स के काटने से होती है। तो उस वायरस के ग्लाइकोप्रोटीन को एक्सप्रेस करवाया गया टोमेटो के अंदर। इसी तरह से लेटस के अंदर जो है हेपाटाइटिस बी जो है, इसके एंटीजेंस को एक्सप्रेस करवाया गया। एंड इन द सेम वे सम अदर वायरल प्रोटीन्स दे हैव आल्सो बीन एक्सप्रेस्ड इन द पोटैटो। एंड हेयर आई कैन कोट द एग्जांपल ऑफ कॉलरा। तो कॉलरा एक डिजीज़ है जो कि ज़्यादातर जो विब्रियो है, माइक्रोब विब्रियो कॉलरी, उसकी वजह से होती है। तो उसके सरफेस एंटीजेंस जो हैं वो पोटैटो के अंदर एक्सप्रेस करवाएगी। एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन those tissue from potato were used, it has resulted in the induction of the immune system.